Hello, hello, welcome, and good evening. Myself, Ranjan sir from Ripple's Face It Academy. I have been into this coaching line since 6 years, and I have been teaching a lot of civil services students. I have personalized in teaching history. I teach history optional as well, along with other subjects. It is not like I only teach history and all. I also teach other subjects. I have personally appeared in the OCS mains twice. This is my third time. I'll be giving a third attempt here. Ripple's Face It is in the news, or Ripple's Face It is going to advertise itself for a new online batch. Correct. We had a lot of offline batches from beginning from 2019 to 2024. I'm बहुत सारा offline batch launch करी but then after 2020 of the COVID lockdown, we gradually are trying to shift towards the online, and in this year 2025 I have entirely shifted towards online. Offline coaching को close करी कि online को shift ही जाइची. तो तेणु करी एबे हमें online रे गोटे नुआ batch launch करूचे, that is called as your Assistant Industries Officer OPSC. Vacancy बहुत पूर्वरु आसी जाइतला. Vacancy भी पूरी आसी जाइतला, form fill up भी सरी गलानी and पिला माने form fill up भी करि सलानी. But the most important thing is, mu kahi ki ए भितरे introduce कले निजो को. There was a lot of request from the students कि sir technical batch start करोंतु and all. Mu civil services personally दोची, but I have graduated myself from mechanical engineering. I had qualified the AIEEE and went to Delhi, Shada University, Greater Noida. So tomorrow mechanical engineering salla, and then I have worked in the production industries for 2 to 3 years up to 2019. Production industry re kama karichi. Even in CTDC Bhubaneswar I have worked for 2018 re CTB I have worked as a CNC engineer and faculty of CNC and production. Correct. The production engineering is my core field and I have a lot of experience in that. तो से पिला माने कहले जे सर गोटे टेक्निकल बैच पई दरकार अछि सेमति तो OPSC AIO रे दीटा जाक पेपर अछि, paper 1 and paper 2. We will discuss all of this in details, but the basic this batch would be specially focusing on technical batch, right? So that is why we are launching a new batch, online batch. Correct. पूरा नुआ बैच रहिबो, entirely new online batch. Starting रू ही तुमको पढ़ाबो, टेस्ट सीरीज भी दिया हबो. आई विल गिव यू क्वेश्चंस माय सेल्फ जहाँ भी टेक्निकल रे क्वेश्चन आसुची एंड जो प्रकार क्वेश्चंस ओपीएससी पचारि पारे से विषय भी टेस्ट सीरीज दिया हबो. करेक्ट. यू कैन परचेज बोथ, आइदर टेस्ट सीरीज भी नहीं पारिबो, पूरा फुल कोर्स भी नहीं पारिबो, सेमति किछि इशू नाही. आई विल एक्सप्लेन यू कि हमर एई प्रोग्राम शेड्यूल रे कोन कोन अछि एंड देन यू कैन डिसाइड कि तुमको कोन करे अछि एंड कोन नाही. If you are interested in taking the course also is good, well and fine. If you are not interested, it also is good and fine. If you want to meet me offline at our offline centers and you want to only clear doubts and you want to have any kind of clarifications, that is also fine. सेमती किछि असुविधा नहीं, offline center भी आसि परिबो, doubt and all clear करि परिबो, right? So basically this online batch is regarding the OPSC AIO. OPSC Assistant Industries Officer सेमिति भी बहुत माने बहुत दिन पर ही तारो वैकेंसी लॉन्च करिछि. करेक्ट. ए वैकेंसी रे पर्टिकुलरली 151 सीट्स अछि. इंटरेस्टिंग दिन सा होछि, ग्रुप बी जॉब अछि, 151 पोस्ट अछि. इजी होबो तुमको क्वालिफाई करिया पे. यू डोंट हैव टू वर्क लॉट ऑफ थिंग्स. गोटे दिन सा अछि, इफ यू आर टेक्निकल ताले बहुत सारा टेक्निकल कोर्स इंक्लूड हेछि. सिलेबस विषय भी हमें डिस्कस करबा. This is some information about us, about Ripple's Face It. We have been in the business from 2019 to 2019 रो हम एठी अछु. मु एठी अछि N1/32 IRC village. This is our address. Correct. N1/32. You can Google it. Google भी करि परिबो. Ripple's Face It. हाला. And you can reach our offline center. We have both coaching and library facilities as well. हाला. So you can take the benefits of both. So this is somewhat description of us. एटा तो तमे वीडियो पॉज करी भी आराम से पढ़ी परिबो, सेथिरे तमर किछि इशू नाही. We will be moving towards the content. Correct. This particular batch will be both for paper 1 and paper 2. Paper 1 रे कोन अछि, paper 1 रे तमरा basically syllabus जहा अछि मु पर डिस्कस करबी. Paper 1 and paper 2 रो classes भी अछि, test series also we are providing.
वन टू वन इंटराक्शन जोड़ा ये लिखा है दैट इज योर स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस करेक्ट एटा डाउट क्लियरिंग सेशंस विषय ये आम लिखुचे डाउट क्लियरिंग पाई तुम ऑफलाइन सेंटर भी विजिट करि ऑनलाइन रे भी करि जदि ऑनलाइन रे कहबो ताहले आमे गूगल मीट रे किबा मो ऐप अछि रिपल्स फेसेट ऐप अछि ऐप रे भी आमे मीट करि परिबा ऐप रे भी आमे डाउट क्लियरिफिंग करि परिबा जदि खाली टेस्ट सीरीज नवाक चाहतो नाही सर आमे टेक्निकल बहुत पढि सालुनी आ टेक्निकल रो नॉलेज हम पाखरे बहुत अछि आमे खाली टेस्ट प्रैक्टिस करिक चाहतो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिक चाहतो देन आल्सो इट इज फाइन you can do that correct the course the batch that I am launching is available on all of them सब किसी तुमको सेठी मिल जिवो correct just 1 minute I'll show you the scheme of the examination this is the scheme of the examination as given by the OPSC scheme of the examination रे दीटा प्रकार रो only two types of sets are there हला दीटा ही सिलेक्शन प्रोसेस अछि गोडा होची फर्स्ट तमारो रिटन एग्जामिनेशन हबो 400 मार्क रो ठीक ए 400 मार्क रो जो रिटन एग्जामिनेशन हबो सेटा भी डिवाइडेड अछि 100 मार्क आउ 300 मार्क भितरे ए 100 मार्क जोडा अछि सेटा को हमें पेपर 1 कहउचे पेपर 1 जोडा की तमरो जनरल स्टडीज हला जनरल अवेयरनेस मैथ्स रीजनिंग करेक्ट तमरो जनरल एप्टीट्यूड एंड योर इंग्लिश ए दिन ऊपर अछि पेपर 2 ए जो 300 मार्क अछि दिस इज कॉल्ड एज पेपर 2 एंड एटा पूरा टेक्निकल सेगमेंट अछि पूरा टेक्निकल माने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रु तुमको क्वेश्चन पचारिबो ए जो 400 मार्क सरला परे तापर तुम पाखरे गोटे पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट अछि 50 मार्क्स रो एंड द एंटायर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज दिस 450 मार्क रो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ए जो सेकंड अछि रिटन एग्जामिनेशन एठी भी क्लियरली बहुत जण मते डाउट पचालेन जे सर रिटन एग्जामिनेशन लिखा होची सब्जेक्टिव होबो ऑब्जेक्टिव होबो एठी क्लियरली मेंशन करा है इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन करेक्ट तेणु करी तुमको सब्जेक्टिव नहीं हला दिस इज द रिटन एग्जामिनेशन जोटा हमें एठी डिस्कस करछे 400 मार्क्स रो जोटा हमें कहउचे दैट इज ओनली द रिटन एग्जामिनेशन आउ किछ तुमको करिवार नहीं तुमको खाली टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ी जीवार अछि जीए जनरल अवेयरनेस मैथ्स रीजनिंग तो डेफिनेटली तुम करू ही थिबो सब एग्जामिनेशन रे से सब दिन से आसुची तो यू हैव टू गो थ्रू दिस करेक्ट इफ यू सी द सेकंड हाफ जदि हम पेपर 1 देखुचे जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस जनरल एप्टीट्यूड ताहले 100 टा क्वेश्चन अछि 100 मार्क रो माने ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क तो एठी इन एन जनरल ऑर्डर जो तुम देखिबो यू कैन मैक्सिमम टू मैक्सिमम केते स्कोर कर परबो 60 टू 70 स्कोर कर परबो दिस इज इन जनरल करेक्ट काहे कि ना 1 मार्क जदि क्वेश्चन अछि ताहले गोटे मार्क ताने इन द सेंस इज तमे जीए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब ठीक कला परे तुमको गोटे मार्क गोटे क्वेश्चन प्रति मिलेबो मैथ्स रीजनिंग जब तुम सब ठीक भी होउची इंग्लिश रे जदि तमे कंसीडर करछो नाही दी तीनटा भूल हे पारे कि कोन जीए रे डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस रे क्वेश्चन आइदर तुम जोन रु आसी पारे अदरवाइज तुम जोन रु बाहर को आसी पारे माने तुम जति करंट अफेयर्स की जति की हिस्ट्री सिविक्स तुम पढ़ी जायछो सेति की जदि भितरे पचाला ताले डेफिनेटली वेल एंड गुड तुम 80 90 भी स्कोर करबो जदि से भितरु न पचाला जदि बाहर करंट अफेयर्स पचाला कि बाहर आउ किछ दिन से पचाला ताले तुम सेति स्कोर करि परिबो नाही तो व्हाटएवर इट इज 60 70 इज एन एवरेज स्कोर जदि तुम जोन भितरु क्लिक लाला ताले तो तुम 80 90 स्कोर करबो किछि सेमिति प्रॉब्लम नाही एठी जो इंजीनियरिंग अछि here it is 150 questions 300 marks ताहले each each question is of 2 marks तो each question is of 2 marks एठू भी तुमको minimum in and out 75 रू 100 questions भितरे करिया पड़े I am talking about questions here not about your marks जदि marks देखिबो ताहले सेमती 150 to 200 marks भितरे तुमको स्कोर करबा को पड़िबो from the technical paper काहे कि the OPSC advertisement जेतले आसीतला सेतले ही से कहितला जे 30% and 35% for the general people is minimum criteria in order to qualify सेमी तो नाही जे 35% ही रहिबो पिला माने बहुत ही कॉम्पिटिटिव हेलेनी पिला माने बहुत दिन से जानलेनी so in and out तमे 50% माने कि चलो out of the 400 marks that you are seeing 50% माने in order to secure your rank तुमको डेफिनेटली एठू 200 मार्क आनिया को पड़िबो minimum ta we are talking about a safe side score of 250 correct we are talking about a safe side score of 250 हमरो safe side score ता माने जदी हमें 250 पाखा पाखी स्कोर करूचे ताले हमरो सिलेक्शन गारंटी हे जाई पारे that is what we are discussing here we are targeting a particular score that is nearly a safe side score मैंने 150 पोस्ट अछि से हिसाब रे वैकेंसी रे रिक्रूटमेंट हबो आ 150 पोस्ट माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम से 700 800 पिला पाखा बाकी इंटरव्यू पाइ नेबे कि 500 600 भी नहीं पारंती दैट इज अप टू द ओपीएससी एंड सेव टू 150 पिला ही सिलेक्ट हेबे करेक्ट
So this is the safe side score. But what is interesting here is the understanding of technical subjects, right? एटा हमरो जो syllabus हमें देखु छे एठी हला we are seeing here the general English, general awareness and general eta aptitude. We have discussed about this. General English रे तमरो grammar and comprehension रहइबो. General awareness सबु किछि ही अछि हला तमे करंट अफेयर्स भी देखिया को पाइबो, हिस्ट्री भी देखिया को पाइबो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी देखिया को पाइबो. तो तेनु कर एठी सबु ही अवेलेबल अछि. क्लियर? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इंडिया. तो एथिरे कोन कि जनरल अवेयरनेस रे जेहेतु करंट अफेयर्स गुडा मेजर सेक्शन रहउची जदि 10 टा 15 टा करंट अफेयर्स आसिला जोडा तमरो जोन रु न आसिला ताले तमे आगु को बढ़ी परिबो नाही. व्हाटएवर इट इज द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज ऑलवेज ए वेरी कंट्रोवर्शियल सेक्शन. जदि तम जोन रु पढिला तमे जहा पढिछो सेही थ्रू क्वेश्चन पढिला देन हिट एंड ट्रायल मेथड वाला गुडे हिट इट एंड पंच इट. इफ तमे पढिछो बहुत दिनस किंतु सेही दिनस भितर क्वेश्चन आसिला नाही एंड द वास्ट सेगमेंट ऑफ द वास्ट सिलेबस ऑफ द जनरल अवेयरनेस is what the major problem is. तो major problem से दिन सोटा हेजिबो, right? Indian economy एठी किंतु गोटे special focus देइछि जे Indian economy is with special emphasis on industry. तामाने Indian economy on banking policies, monetary policies एई सब दिन से important नुहे. Indian economy on industrial policy is important. एई दिन सोटा से specify करिछि. तो if you are seeing the economical question ताले industry रो GDP कि बा industry रो output केमति हला कि तमरो जो जहाँ भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी को सेगमेंट रे इंडिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ आणुची सर्विसेज सेक्टर रे कोन तापरे आयरन एंड ए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे इंडिया केमती ग्रो करची. ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस मे अराइव इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? तो इफ यू सी हियर द पेपर 2 रे तुमको देखो 81st दिया है यूनिट 1 सी एंड डेटा स्ट्रक्चर. तामाने सी एंड डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द यूनिट 1. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज हियर. I'll help you with the mechanics, no issue with that. I am a particularly mechanical engineer graduate. I am here to teach you about all of these. Engineering mechanics अच्छी, mechanics रे you can see the syllabus, concurrent forces अच्छी, composition अच्छी, parallel forces अच्छी, center of gravity तमे धरो, Pappas-Giddens theorem अच्छी. ये सब दिन सब we will discuss in detail. एते बने detail भितर को नहीं D'Alembert's principle अच्छी, Pappas-Giddens रो theorem अच्छी, and principle of impulse and momentum, conservation of momentum. ये ऊपर तमरो questions रहिबो. ठीक अछि. तो this is an easy part, किछि बेसी व्यस्त हवा दरकार नहीं. ए जो unit 3 अच्छी, this is of manufacturing process. Manufacturing process, I expertise in manufacturing process, so you don't have to worry about this manufacturing process. Lathe, milling, drilling, all of the information I'll give you here. जदि तमे करिचो तम कॉलेज रे बीटेक बेले करिचो, then also it is fine. If you have not done in the बीटेक माने किछि मशीन देखिने कि किछि मशीन हमें करिने कि सेमती माने रिगोरस प्रैक्टिस हमको करा है ही नहीं कि whatever it is, then also it is perfect. I'll teach you. You will not look after the books for the second time, correct? गोटे होची तमरो लेथ मिलिंग एंड ड्रिलिंग. तापरे एठी एते बहुत दिन से लिखा है सिंपल दिन से होची कास्टिंग एंड वेल्डिंग हला. कास्टिंग पचारिबो, वेल्डिंग पचारिबो. से दिन से तमरो इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे बहुत ही इंपोर्टेंट. तो कास्टिंग पचारिबो, वेल्डिंग पचारिबो. ए कास्टिंग भितरे बहुत सारा दिन से अछि. मोल्ड प्रिपरेशन कलो तमे कास्टिंग रे मोल्टेन मेटल ढाळुचो किबा तार सॉलिडिफिकेशन टाइम देखुचो, केते प्रकार तार अलायंसेस देबो, मशीनिंग अलायंस अछि, तापर कास्टिंग रे तमरो श्रिंकेज अलायंस अछि, बहुत सारा अलायंसेस अछि एंड ए सब दिन से तमे सेही भितरे कैलकुलेट करबो. तो न्यूमेरिकल्स भी किछटा आसी पारे तुमको सॉलिडिफिकेशन टाइम, थर्मल एक्सपेंशन रे केते कोन एक्सपैंड होची, श्रिंकेज अलायंस केमति कैलकुलेट करबा, प्लस तमरो कोएफिशिएंट ऑफ हीट केते अछि, केते टाइम भितरे से सॉलिडिफाई करबो देखौची. एई सब दिन से ऊपर छोट मोट न्यूमेरिकल आसी पारे न आसी पारे, सेमती किछि माने नाही जे आसीबो ही. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेहेतु अछि 2 मार्किया क्वेश्चन अछि, छोट मोट न्यूमेरिकल आसी पारे, बेसी लेंथी न्यूमेरिकल आसीबो नहीं, छोट मोट न्यूमेरिकल आसी पारे. अदरवाइज एल्स बेसिक थ्योरी भी तुमको पचारिबे. थ्योरी रे भी बहुत सारा क्वेश्चन अछि. मोल्डिंग सैंड केते प्रकार रो, ग्रीन सैंड कोन, लोमी सैंड कोन, तापरे मोल्डिंग जो तुमरो पैटर्न होची, पैटर्न केते प्रकार रो, केते प्रकार रो कास्टिंग अछि, इन्वेस्टमेंट डाई एंड ऑल. सेमती वेल्डिंग रे तमरो ऑक्सीएसिटिलिन फ्लेम अछि, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अछि, टीआईजी अछि, एमआईजी अछि. all of these kinds of questions can be asked, and this you don't have to worry. Mukhaili, I have the production engineering part entirely will be solved by me. If you are here for basic electrical engineering, it is the 4th part achi. I have another faculty, correct, Janmajan Adha sir. He will be coming to you for the electrical. He is a electrical engineer, correct. He will also be coming for you to teach you this electrical and electronics. That will be his part. So electrical and electronics pain on the sir asibe, and he will teach you this. Civil engineering will be taught by you will be taught to you by another faculty, correct.
तो सिविल इंजीनियरिंग ପାଇଁ भी आसीबे क्वालिटी मैनेजमेंट जोटा तमे कहउछो क्वालिटी मैनेजमेंट करेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एठी जोटा अछि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करेक्ट आ ପାଇଁ भी सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी एक्चुअली जो मान थांती माने टिके एनवायरमेंट विषय भी इंजीनियरिंग करते तो द सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी जे आसीबे सी तुमको सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट नै जिबे करेक्ट नंद सर तुमरो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल बुझे देबे आई विल बी टेकिंग द मैकेनिकल पार्ट आई विल बी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट so this is your technical background. The schedule of the classes are basically fixed in such a way that either in the morning 7 to 9 batch correct or in the evening 7 to 9 batch kahinkina I myself am preparing for a lot of preparing for civil services and then the other faculties are also working in government offices so they will be not available from 9 to evening 5 to 6. So either the batch will be in the morning 7 to 9 slot or in the evening 7 to 9 slot correct or either in the morning 7 to 9 right or in the evening correct evening 7 to 9 whatever it is this will be 7 to 9 am or 7 to 9 pm correct. We will see the strength of the students को students majority रे केमती आछंती online batch अछि तम त recording भी देखि परिबो सेमते किछि issue नाही but we will see the majority of the students को time रे opt करूछंती and से हिसाब रे batch set कराबो if there are students enough for both the batches ताल morning रे भी हबो evening रे भी हबो both the batches will run together एठी गोटे class हबो सेठी गोटे class हबो you don't have to worry about that. For the registration process this is our QR code for the Ripples Facet app. You can get into the app by scanning this QR code correct app रे तुमको store रे देखा जीवो AIO batch correct तो app रे store रे भी अछि से store रे ही तुमको AIO batch रे सब details भी मिल जीवो. You can scan the QR code and link into the app download करि परिबो app download करके login भी करि परिबो right. Otherwise else you can visit our offline center and talk about the admission process or else you can go through the app रे भी तुमको registration details and online admission पई हे जिवो सेठी ही तुमको देखा जिवो online admission पई. Course fees बहुत जण मत पचारन सर course fees कोन रखबे and all course fees देखो as this is an online batch तो basic course fees ही रहिबो you don't have to worry about that. बेसिक किछि माने सिविल सर्विसेज आईएएस ओएस भले लखे दिले गटा सेमति तो कोचिंग किछि नाही बेसिक ऑनलाइन बैच रहइबो तो इट इज ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. I will be starting from April and we will be ending by June भितरे सरी जिवो because the examination is to be scheduled on June माने जून रे हबार अछि either June रो हबो नहल टिके डिले हेकी जुलाई रे हबो ताटू बेसी डिले हबोनी तो 2 to 3 months रो कोर्स 3 months हिसाब रे तमरो एडमिशन फीस रहइबो you don't have to माने सेथरे बेसी मुंड लगेबार भी नाही करेक्ट. If you have any other problems or you have any other doubts आउ तमु किछरा पचारिवार अछि कि आउ किछरा दिनस बुझिवार अछि कि आउ किछि माने क्वेरी अछि तमरो then you can contact us through our email ripplesfacet@gmail.com or else you can contact us on this numbers correct. You can call me directly, one of these number is mine, you can call me directly and you can clarify your doubts if you have any doubts regarding कि सर आउ कौन कौन पढ़ाबो कि कौन नहीं और material कौन कि कौन whatever it is whatever your doubt is you can clarify here correct. So this will be all by me for the introduction of the AIO batch correct. I hope you have understood कि हमें को batch पई कौन services provide करूचे. I am not giving you a class here in this particular lecture. In the next lecture I will be taking a particular demo session जोटा तमे everyone is demanding कि सर गोटे demo class की गोटे live class हमें देखि थांते. You will be getting the link तुमको YouTube रे link share मिल जिवो. I'll be taking a demo session of the assistant industries officer beginning with your manufacturing science lathe and milling ru start kariba and I'll giving you a demo session of that. Please go through that, like, share and subscribe. Maximum lokon kara benefit hoba darkar correct. If you like the videos then move forward, come to the offline center or you can also join through the online app रे तुमको access मिल जिवो सब classes रो app रे ही class हबो. YouTube रे जहाँ demo sessions हबो सेरा YouTube रे demo sessions हबो बाकी सब classes app रे ही चलिबो. Those will be the paid classes. The paid classes आमर app रे चलिबो. We'll see you in the app after this correct. Thank you. This will be all for now. See you.